Hello friends, today I'll be sharing the exhibition of ASHOK BHOWMICK, and this is being held at Dhoomimal Gallery, New Delhi. और यहाँ आप 1980 से लेके 2022 तक के काम देख पाएंगे इनके. And he has exhibited over the world, all over the world, in New York, in Tokyo, Sydney, Barcelona, Karachi, Lahore. और अब ये मेजर एग्जीबिशन आप देखिए. And this is the first day, the opening day, and you can see the gathering. और ये gathering, it was more than 200 people were there. Yes, जून के महीने में 200 लोग एक गैलरी में एक आर्टिस्ट के शो देखने आ रहे हैं. It's something historic. You can see the work. Cross hatching उनकी specialty है. Canvas and paper both has been exhibited over here. He's not only an artist, he's also a very serious writer. तो इनका बहुत सारा रोल है अलग अलग. एंड यस, यहाँ पे एक सरप्राइज़ भी है. बुक, आई कॉल इट बुक बिकॉज जिस तरह से प्रोडक्शन है, जिस तरह से इसे प्रेजेंट किया गया है, ऑल्दो दे कॉल इट अ कैटलॉग. तो कैटलॉग को भी रिलीज़ किया गया है और इसे रिलीज़ किया है धूमिमल आर्ट गैलरी ने. यहाँ पे उदय जैन थे, उमा जैन एंड मिस्टर चिनॉय, राजन फुलारी फ्रॉम WUD, तो सब मिल के इसको यहाँ पे लॉन्च कर रहे थे. तो आप वो भी देख पाएंगे. बट द वर्क्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. बहुत इट गोज़ इनसाइड योर हार्ट. ये कहीं कहीं छूते हैं. आप इनके ब्लैक एंड वाइट वर्क्स देखेंगे, दे आर absolutely fabulous. Even the works which are on canvas, the color ones, सोच है इसमें, बहुत कुछ गहराई है. तो जिन्होंने नहीं देख पाए हैं, आई फील सॉरी फॉर देम. लेकिन आर्ट कीपर है आपके साथ, और आर्ट कीपर को सपोर्ट कीजिए. बी विथ आर्ट कीपर, सपोर्ट आर्ट कीपर, सब्सक्राइब एंड शेयर. आई एम ऑलवेज विथ यू. आप देख पाएंगे नए नए एग्जीबिशंस, नए नए आर्टिस्ट. लेकिन प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों का. It's a vibrant gathering, and yeah, here you can see Rajan Fulari, thumbs up, yes. And the gathering is giving me a lot of hope. Lot of hope is basically कोविड के बाद इस तरह की गैदरिंग्स और इस तरह के वापस आना आर्ट का, इट्स गिविंग अस लॉट ऑफ होप एंड स्ट्रेंथ टू कीप वर्किंग. ये आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है और ये करते रहिए. हर गैलरी के लिए बहुत ज़रूरी है.
सम मोर वर्क्स जो इनके ऑफिस में है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन पेपर। वॉल्टेक्स के लिए ना। हाँ, हाँ जो फ्लेक्स ये सन बोर्ड पे बनेगा। हाँ जी। क्या मतलब? यही तो है, मैंने आपको भेजा था ना। हाँ हाँ, मैं ऑनलाइन ही हूँ। एक्चुअली एक चेंज मैं बता सकता हूँ आपको। मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ। और उसका सब्जेक्ट 90s के बाद की दुनिया 90s के बाद आई एम गोइंग अपस्टेयर्स। जो ब्लैक एंड वाइट सेक्शन है वो उन्होंने सेकेंड फ्लोर में रखा हुआ है अपस्टेयर्स, एंड लाइक इट्स डिवाइडेड इन अ ब्यूटीफुल वे, लाइक कलर्ड वर्क्स एंड ब्लैक एंड वाइट वर्क्स। तो जो ब्लैक एंड वाइट पेपर वर्क्स हैं वो सेकेंड फ्लोर में है, आपको जाना होगा। सो लेट्स गो ओवर देयर। और मैं यहाँ कोई म्यूज़िक यूज़ नहीं करूँगा। आई फील बोरिंग लगता है। म्यूज़िक क्यों चाहिए आप लोगों को? इट्स आर्ट इटसेल्फ इज म्यूज़िकल। ये लाइंस अपना म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं, अपना गजब म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं। सो आपको एक्स्ट्रा म्यूज़िक क्यों चाहिए? डिंग डंग डुंग डंग, नो, यू डोंट नीड बीट्स एंड ऑल दैट क्रैप। सो enjoy the works. So let's go upstairs and see more works of अशोक भौमिक। और ये फर्स्ट डे है जैसे मैं बता चुका हूँ, एंड द क्राउड वॉज फैबुलस। इसके बाद ही क्राउड शुरू होता है, एंड आई ऑलवेज डू वीडियोग्राफी बिफोर द क्राउड एंटर्स द स्पेस। सो you will not see the crowd right now, but there were more than 200 people were there। और जून के महीने में the works, हम लोग staircase को पास कर रहे हैं, and we'll go upstairs and see the black and white works। So let's go। Now I'm entering this black and white section. As you can see, this complete room is filled up with works done on paper, black and white। Primarily उनका जो स्टाइल है it's based on cross hatching, और बहुत इंटेंस वर्क्स हैं, पेंस्टेकिंग है, पेशेंस चाहिए। Most of these works are from 1980, 80, 82, 83, 84।
तब जो इनका स्टाइल था आज भी वही है, लेकिन थीम्स एंड आइडियाज़ हैव चेंज्ड बिट. इंटेंसिटी वही है, जो विजुअल एक लैंग्वेज है वो सेम है, बट उसमें एलिमेंट्स चेंज हुए हैं. जब आप मूव करेंगे फ्रॉम डाउन स्टेयर्स टू अप स्टेयर्स इन दिस एग्जीबिशन एरिया, you'll get to understand. So ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा आप पहले सेकंड फ्लोर में जाएं, ब्लैक एंड वाइट सेक्शन में जाएं, फिर आप नीचे आएँ. नीचे से ऊपर ना जाएं, ऊपर से नीचे आएँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए. you'll get to know the works. And this area which you can see right now, this open area and the terrace, this is the area where the celebrations were happening. और उस एरिया में ही ज़्यादातर गेस्ट को एंटरटेन किया गया. And looking at these works, I tried to absorb the the process and the thought process and the technicalities of these drawings. किसी चीज़ को इमेजिन करना, फिर उसको क्रिएट करना, इट्स ए वेरी मिस्टीरियस प्रोसेस. और काम को देखना, आर्ट वर्क्स को आप देखते कैसे हैं, वो नज़रिया डेवलप कीजिए. बच्चों को सिर्फ कॉलेज में भेज देने से कुछ नहीं होता है. एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स नाउडेज दे डोंट वांट टू ड्रॉ, दे डोंट वांट टू होल्ड द पेंसिल और द पेन एंड यूज़ पेपर. मोस्टली दे आर यूजिंग टैबलेट्स एंड डिजिटल वर्क्स करना चाहते हैं. ड्राइंग तो कोई करना ही नहीं चाहता. सो आई डोंट नो, we are losing out. There will be a time when nobody would love to do drawings. वो सिर्फ abstract paintings करेंगे और digital works करेंगे. That's it. This kind of works will be rare in future.
Please support Artkeeper. Stay with Artkeeper. Subscribe in large numbers. Share with your loved ones. मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है. सपोर्ट करेंगे तो मैं इस तरह के वीडियोस और भी बनाऊंगा. So please share with your friends and family, and for especially for students, please subscribe and watch this channel. Please stay with this video. The interview with ASHOK BHOWMICK is coming shortly. Stay. This is the official launch of the catalog. आप इसे catalog कह सकते हैं, but I call it a book made in the shade. इस exhibition का जो catalog है officially being launched by Dhoomimal Art Gallery, and Mr. Jinoy is there, the artist. ASHOK BHOWMICK is there, and people from faculties and people from WUD, World University of Design is there. Rajan Fuladi is there on your right, and Kadir Raghiv is also there on your right in blue suit. Can we have a round of applause, everybody? Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Professor ma'am and sir. Really means a lot for us. Ashok sir, would you like to speak two words before we formally start the evening? Thank you very much. And I warmly welcome everybody here. And it's my pleasure that today I will exhibit my works almost for the first time in the last 20 years in Delhi. I'm in Delhi for the last 20 years, but this is the occasion when I'm showing many of the works for the first time. And thankful to Jinoy, thankful to them, a special thank you to Umaji for giving the chance to show my works. And I think you have enjoyed the work, and that is all I have to say today. Thank you. So Jinoy contacted us a while back to do Ashok Ji's show, and I must say I've not seen the full body of work originally, but once we were doing the display and once we saw the whole body of work, I think it's tremendous to see his. It's a very distinct style that he has. In fact, somebody was saying that his works you can recognize even without the signature, which is always a sign of a great artist. When you can recognize the work from the work, not necessarily just the signature. And yet, despite it being so similar, also there's still a lot of variety. That no, it's not like if you've seen 5 works, then you've seen the whole genre. You see different works, and it's of course come together very well. We have it on 2 floors. On the upper floor, there's some early drawings as well from the 1980s, which are almost 50 years old now. And so yeah, please, we're very happy to bring you the show and go have a look. Everyone should say a few words also. Yeah, no, please. Haraiba. On behalf of the gallery, DMG, the faculty who is felicitating Sir today, we would just like to welcome you with a small bouquet. Ashok.
space. Yeah, exactly. You should kind of come here. I'm so sorry for that last minute chaos. As we are all aware, we are gathered here to confirm Mr. BHOWMICK, senior artist, with WD Critics' Choice Award. I'd further like to invite, I'm sorry Sanjay sir is not here, I should have edited that, my bad. I'll quickly speak about sir. ASHOK BHOWMICK, a senior renowned artist from India, is also known as a master of cross-stitching. ASHOK is a multi-talented individual and practicing artist since more than 4 decades. Apart from being an exceptionally good painter, he is also an exceptionally good sculptor and a profound thinker and a writer. Be it paper or canvas, small or large, ASHOK fills the spaces with a unique cross pattern. Rendering with pen and ink, he creates the darker spaces with dense mesh of lines, while lightning eras are achieved through controlled arrangements of lines. It is indeed a matter of utmost dedication that has made his painting so exclusive that it has become his inimitable style and signature. Thank you so much, Ashok sir. I'll quickly tell you what the WD Critics' Choice Awards are. WD Critics' Choice Awards for visual arts have been instituted by World University of Design to encourage and empower the Please support Artkeeper, subscribe and share. Friends, we are going to talk to ASHOK BHOWMICK and Mr. Jinoy from Splash Art Gallery. And right now, I'm sitting inside the campus or the space of Dhoomimal Art Gallery, New Delhi, one of the oldest gallery. बात करते हैं अशोक सर से. अशोक सर राइटर हैं, फिलोसोफर हैं और आर्टिस्ट हैं. मैंने जिस ऑर्डर में बोला पहले उस ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है. तो आर्टिस्ट से ये ज़्यादा वो राइटिंग में बहुत ज़्यादा हैं, उनकी फिलोसॉफी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड ही इज़ ऑल्सो एन आर्टिस्ट. उनकी आर्ट का ये फर्स्ट मैं कहूँगा एक मेजर शो हो रहा है दिल्ली में. इट्स एंड थैंक्स टू मिस्टर जिनॉय फॉर दैट. Ashok, the first question comes to you. The source of inspiration for your art. First dig into that, please. Source of inspiration, if you ask me, that it was my mother who taught me the first lesson in painting. And she was a very good painter, but as it happens to every Indian woman, Right. they don't get chance to develop their skill. So her manifestation, I mean, whatever she could do, that was in stitching and sewing and other things. But I learned painting from her, and she encouraged. But the problem was that in my family, that if you want to be known as a learned or educated person, you need to have a master's degree in science. Less than that, nothing would happen. You are not allowed to go for And masters in art also. Even master in arts is not sufficient. You have to get a degree of PhD. Science and then go for PhD. My both the brothers, they are scientists. They passed out from IIT. I was a bit off from the family. I was the third and the smallest in my family. Okay. So when I was doing my high school and intermediate, I was attracted to art. But then I didn't get the chance to go to the arts college. Okay. So it was a learning process of art that started during that period. And even today at this age also, I have not stopped learning and studying art. So this is, you may call it this inspiration. And the society is the biggest inspiration. Rather, I would say, that is either compels you to paint, compels you to draw, compels you to write, and that is all. So, do you get disturbed by things like whatever happening in politically or economically? So actually what happens, many people say, they call me writer, as you said. Right. Writing is not my passion, or writing is not the thing which I enjoy. Writing is the thing through which I express myself. That's whatever the things are very not strong happening. words and very
Yeah, prominent very, very things. clear about it. I'm not writing for getting any Sahitya Academy. Neither I expect that somebody to recognize me as a writer. Right. I'm a story writer also. I write books on art also. Right. I want to challenge, I want to question whatever the idea which we have been nurturing about the painting, particularly Indian painting, since last 2 centuries. Right. So sometimes we call that it is a colonial influence, and the Bengal school was actually an attempt to free themselves from the colonial influence. Then again we say around 47 we find the people are rushing towards the influence of imperialism, that is America. So whatever they were, I mean, you find them that time they were during the post-Second World War period, and that coincided with the independence of India, and we find that all of a sudden the abstraction erupted, and everybody was trying to paint like abstract expressionists. So that was a movement, and now it has gained the validity, and the people say that this is a very important art, because a group of people who are confined to metro cities and the bigger cities, Right. and even I would say a portion of a bigger cities, like in Delhi, if you call Delhi, if it is the south of the Delhi, those people there, and they have got the definite idea about the art, and they say that this is the art and else is the rest of the things are not art. Okay. So I don't think it is correct, so I write. Because I paint whatever I feel like, but I write to change the society, because I don't think by painting you can change society. Right. It's maybe one step. But I'm not under any illusion that if I paint something revolutionary, the things will change. No. If you have to do something revolutionary, you have to go out and go to the street and take up some other measures, not the painting. Not painting. So it is, I am also painting, but it is nothing related to my, whatever I have seen, I have felt, I have recorded in the painting, in some of painting, not always. Some paintings I bother about its composition, some painting whatever the reason of painting a particular piece is not that I want to communicate, I want you to look at the painting in the same way, the way I have created a painting. No, I cannot. Okay. And finally, I don't believe that artist is a very particular, very important, or very special kind of existence in the society. No. He is as common as a common man. Only thing is that I paint and somebody else maybe they may sing, somebody may be acting. May not be recognized in that way, that may be true. But then this is it. So I'm very down to earth. I don't consider that artist, at least me, as a very significant or particular or different than other people kind of thing. Okay. That's all. Ashok, I have seen your black and white works also. It's like if you go upstairs, you can see the black and white works. Black and white works and this colored works. The language. The black and white demands a different kind of a language, and the black and the colored ones I have seen. So which is your favorite? The black and white is very strong and very critical, and sometimes they are very disturbing also. So As far as medium is concerned, when you said the black and white, my all paintings are black and white. Primarily they are black and white. Right. In They're all some of the lines. painting you find color, right. but there is you won't find any absence of black and white. So it is a continuation, and as you have rightly mentioned that my works of 1980 or 1974, Yes. you find that actually I personally believe that is probably it's a journey of my understanding. My understanding about art, my understanding about the purpose of art, my understanding about whatever things are happening around me. Okay. At one point of time, I used to believe that by painting I may change the society. At one point of time, I used to believe that my painting should be very complex to tell others that yes, I am a very special kind of artist. Nobody can match with my complexity. But now, after passage of time, I realize that painting should be absolutely simple and uncomplicated. It should talk to the viewer as a good friend, very intimate friend. It is not that I don't want to be, I don't want to talk to my viewer in a guise of a philosopher. I don't want to terrorize them with my thoughts. So in a way, are you also, don't you think you are compromising that way to dilute the thing so that viewers should get it? No,
diluting a thing or giving overemphasis, everything will be decided after 100 years. Right. Because I believe in the words of Panofsky, who said that the right evaluation of the work of art is always done after 100 years. So after 100 years, all this halla gulla will step down, and at that time, the next generation will decide who was diluting and who was doing excess. So as I said to somebody was asking me about my stand with the colors. Right. Well, whatever I feel like, I paint, I use the color. I don't use blue, but just because to tell you that, well, I have taken from Rajasthan. So I don't have any connection of my blue with the Rajasthan. Right. I don't have any connection of my green with the Bengal. Okay. I don't have any connection with my red with some other country. Okay. So it is I have got relation with my palette and the canvas and the viewer, and that's all. I don't want to make it very big thing that I am painting, so I am painting something very big, and it has got some relation with the universe, it has got some relation with the philosophy, it has got relation with some eroticism, nothing like that. It is very simple. Maybe you find some of my work complex, so that has happened just. It is not my intention. And now you find that, as you said, that in my recent work, you find things are very direct, very simple. Anybody should come inside my gallery and they should enjoy, and they should have their own way to interpret the painting. As I believe that paintings are not there to make you understand the painting. I want you to make feel the painting. That is the basic difference I'm working on, and I believe in that. Paintings are for feeling, not for understanding. Now I'm talking to Mr. Jinoy from Splash Art Gallery. Mr. Jinoy, what was in your mind when you thought about this entire exhibition? It's a huge collection of work. It's a huge body of work. What came to your mind? Like, what was the initial thought? The initial thought, if you ask me, it was his Ashok Das technique, the crosshatch. Okay. So maybe this is the first time, maybe somebody can see a good amount of cross-hatchings. That too, starting from the 80s, then even the recent ones. So Okay. a lot of good works are here. And you won't even, get to see these kind of, you may even get 2 to 3 works maximum. But in an exhibition, in a solo exhibition, you will be able to see a lot of them. So the idea was mainly to put all these together in a solo exhibition. Right. Yeah. So, coming up with a book also, I have seen the catalog. I don't call it a catalog. It's a beautiful book. Yeah. So a lot of thought have been put up with this thing. So how you plan out this kind of shows? How you plan out? So initially even we thought of just putting only the recent ones, but when we again when we were looking at his artworks, we have seen some lot of old works, 80s, then 85s. So Okay. we just then again thought instead of just doing a recent exhibition, we may plan it in a different way. So then we finally thought of we should do a mini retrospective show. It's a kind of retrospective. Yes, that is the idea. That was it. So now even if somebody who is coming to see the works, they can see the old ones. Right. They'll then know that okay, now the new works are again different. Though he's still in each and every painting. If you look at the amount of the cross-hatching, or the Right. message he is trying to convey, or the painting which he is giving, it's completely different. Sometimes planning out all this kind of exhibition as a gallerist, Yeah. it demands a lot of research on your part about the artist to put up an exhibition. So did you do any kind of a research on his works? Yeah, even if you ask me, I was looking at his art for the last around 10 to 12 years. Okay. Then even when he was with some other gallery, or maybe he was very well selling. So it is, I was always very fond of these techniques, even if you ask me. Again, I like the strokes which he has done. So then we thought, maybe this is somebody we should try to again bring back into the market, or we should try to sell his painting, or we should even give, we should even showcase to the public that there is an artist, ASHOK BHOWMICK. You can see the quality of the art. So it's something really grand. Like he deserves it, I believe. Ashok Da. I also know him Yes. for more than 10 years.
He deserves it. Yeah. So, do you want to take this work to other part of India also? Like, are you concentrating only on Delhi? No, no, not at all. So we are planning to take it to even in India and even abroad. So we are planning a lot of tours. Now Okay. we are planning to go to Israel for an Mhm. exhibition. Okay. Then even in the Middle East. So we are planning a lot of them. Yeah. Thank you so much, Mr. Jinoy, for your time and for your ideas. Thank you so much. Here you can see on your left Ashok BHOWMICK, on your right is Jyotish Joshi. He's from Lalit Kala Academy and he is very well known figure. काफ़ी पुराने हैं, जुड़े हुए हैं ललित कला एकेडमी के साथ और वो मिलने आए थे अशोक जी को एंड आई कैप्चर्ड दैट मोमेंट. आप देखिए हाथ में मोबाइल किसी के देख चुके हैं, चिपक चुका है इस जनरेशन के हाथ में चिपक. Ashok, I'll be asking you a question regarding the lines. The power of lines, the language of lines in your works, whether it's painting, whether it's drawing, how you explore that? आपके lines cross hatching में जिस तरह से volume create करते हैं बिल्कुल अलग, and it's mostly lines which talks to the people. So why fascinated about lines? And tell me about that, sir, please. Actually, if you see the line, and if you are working on any graphics, say when you are using line for etching, and when you are using a line in painting, and when you are using or considering a line in terms of a geometry, so they may be of different meaning, because in the painting many lines they appear as a space. In fact, appear as space, especially in the paintings of Rabindranath Tagore. You can see that if you divide the space into three parts, say both the part, if you keep dark colors and middle part you leave as white. Okay. So if you keep reducing that white space by increasing the two black areas, finally you come to a narrow space which you call a line in painting. Okay. Even in Raza Shah's painting also, you can see in between two colors, solid color, there is a white space. They appear as a line. So line in a simple meaning, it's a very simple, that is a straight line. In geometry, which is called the minimum distance in between 2 points having no thickness. So in painting, when we use lines, I use lines for different purpose altogether. It is not as a drawing element. That's not to draw something. I'm not using line to draw something. Instead, my lines are to create the light and shadow. My lines are to fill the spaces. My lines are to leave the spaces of the white. So generally, whether you see it is black and white work or color work, both the things, in both the cases you will find they are essentially black and white drawings. So drawings, generally what we think about, what we consider drawing as a preliminary primary sketch. You do it before you fill it with the paints. In my case, I have taken lines to fill the space. Okay. So you can see that when lines are very near to each other, they create the dense areas, which is dark. And when they are rarer, there is a gap in between two lines, or in between lines, you find the light coming out. So this is how I manage the dark and light area of my painting. Okay. Now the question is that when I use color as a base, then over the color I cross hatch. So that the most intoxicating part of this experiment is that when I use, say, cobalt blue as a base, and when I apply cross hatching over the cobalt blue, it turns into some different kind of blues with a different richness or depth, which I can't find, which nobody can get in the palette. Just by mixing black and blue, you can't get that color.
So this is one thing that keeps me alive, and it's one thing that keeps me going. So every time what color I use as on the canvas as a primary coat, it is altogether different from what it comes finally after I cross hatch. So this is a mystery, and this is a challenge also. Most of the color, of course, for some color I know I can predict that what color it will be after cross hatching. But in many cases, it is very difficult to predict that what it will be. So and it is in your hand to increase the depth. It is in your hand to increase the light, and how it works in my case. You're also a writer, Ashok da. So how is it like your writings complementing your art and your art is complementing your writing? मतलब इन दोनों में इस तरह का क्या रिलेशन है? मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे हैं? हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। जब मैं लिखता हूँ तो मैं एक अलग मूड में लिखता हूँ और उसका एक अलग पर्पस होता है। मैं लिखता तब हूँ जब मुझे लगता है कि ये पेंटिंग में कह पाना संभव नहीं है, तब मैं लिखता हूँ। इसलिए मैं दो तरह का लेखन मैं करता हूँ। एक तो कहानियाँ लिखता हूँ और उपन्यास लिखता हूँ, और दूसरा लेखन जो है मैं कला की समीक्षात्मक लेख लिखता हूँ। कला के ऊपर जो मेरी समझ है मैं चाहता हूँ कि वो लोगों तक पहुँचे। As an art critic maybe? Not art critic as such. ये बहुत बड़ी बात है कि आज कला समीक्षा का एक बहुत भारी भरकम शब्द है, और वो एरिया जो वो हिंदी में कम से कम वो क्षेत्र जो है वो कवियों के लिए छोड़ दिया जाए फिलहाल। ओके। क्योंकि कवि ही कला समीक्षक हो सकते हैं, और हम लोग तो चित्रकार हैं, हम लोगों के लिए वो गुंजाइश नहीं है। हाँ, जो मैं कह रहा था, जो कला समीक्षा के बारे में जो कुछ भी लिखता हूँ वो तब लिखता हूँ कि अंदर से मुझे लगता है कि इसको कहना ज़रूरी है। मैं हिंदुस्तान के करीब 100 शहरों में गया और वहाँ कला के ऊपर मैंने बातचीत रखी लोगों से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए चित्रों को दिखाया। तो मुझे लगता है कि उसकी भी सीमा है, मैं कितनी दूर जा सकता हूँ, कितनी बार जा सकता हूँ, कितने शहरों में जा सकता हूँ। तो लिखना मैंने तब शुरू किया और मैं लगातार लिखता रहा हूँ। मैं कई पत्रिकाओं में बच्चों के लिए मैं लिखता रहा, चकमक में, साइकिल में, प्लूटो में, जो शुद्ध रूप से बच्चों की किताबें हैं उनमें चित्रकला के बारे में लिखना चाहा। मेरा जो लिखना जो है वो एक प्रतिरोध भी है, एक रेजिस्टेंस भी है। जो पॉल्यूशन है जो बराबर फैलाया जा रहा है चित्र बच्चों के बीच में, कि इस चित्र का मतलब ये होता है, लाल रंग का मतलब ये होता है, हरे रंग का मतलब ये होता है। मैंने दुनिया में कहीं ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से बच्चों को, एक पीढ़ी को, एक भले सुनियोजित ना कहें पर अनायास ढंग से बर्बाद किया जा रहा है। एक थॉट प्रोसेस को दिया इस तरह बर्बाद करने की बात है कि जो आप बताते हैं कि भाई ये जो कपड़ा पड़ा हुआ है इस चित्र में, जो पीला कपड़ा है, तो पीला कपड़ा मतलब विष्णु जी का कपड़ा है। तो इस तरह की जो बातें जब हम करने लगते हैं, जो चित्र के जरिए हम जब ऐसे कथाओं को गढ़ने लगते हैं जो सुनने में शायद अच्छा लगता है, पर चित्र देखने की जो तमीज़ है वो हमसे छिन जाती है। हमारा देश ऐसा देश है, हमारी संस्कृति ऐसी संस्कृति है जहाँ पे शायद 84 या 85 करोड़ या उससे भी ज़्यादा देवी देवताओं का वास रहा है, उतने ही संख्याओं में राजा रानियों का वास रहा है। अब इनकी सबकी अपनी अपनी कहानियाँ, भगवान है, करोड़ों, और राजा रानी भी तो कम नहीं है। हर प्रदेश में, हर घर में कहानी राजा रानी है। तो इनकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं जिनको कि चित्र के जरिए इन्होंने शाश्वत बनाने की कोशिश की। अब निरक्षर जहाँ पे जनता होगी, दुनिया में कहीं पे भी होगी, वहाँ चित्रकला का उपयोग किया जाएगा धर्म द्वारा, राष्ट्रसत्ता द्वारा, कि जाकि जो लोग पढ़ना नहीं जानते उन तक इस कथा को पहुँचाया जाए, उनके दिलो दिमाग में इसको एक डर जैसा बैठाया जाए, और उस कहानी को कहने के लिए एक चित्र को माध्यम बनाया जाए। बिल्कुल। तो पर चित्रकला इसके अलावा भी होती है और होनी चाहिए। अगर आधुनिकता कोई शब्द है तो आधुनिक कलाकार जो आपके 20वीं सदी 21वीं सदी के हिंदुस्तानी कलाकार जब गणेश बनाते हैं तो मुझे आश्चर्य लगता है कि ये आधुनिकता का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि गणेश जो है वो तो किसी चित्रकार ने नहीं बनाया, वो तो बनाया कंसेप्ट है कि एक मनुष्य का शरीर है, हाथी का सर है, और उसको गणेश कहते हैं। तो अगर आज मैं गणेश बनाता हूँ तो वो मेरा क्रिएशन तो नहीं, मेरी रचना तो नहीं है। मैं
वो गणेश के बारे में जो विवरण है, जो लिखित विवरण या जो वाचिक विवरण हम तक पहुंचा है, उसका हम चित्रण कर रहे हैं। वो मेरी रचना नहीं है, वो किसी और की रचना है, वो पुराण की रचना है, वो किसी धार्मिक ग्रंथ की रचना हो सकती है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने नहीं समझा, और वो तो खैर जो बात हम लोगों के साथ गुजरा वो तो ठीक है। जो बच्चों के साथ हो रहा है उसको मैं रोकना चाहता हूँ। मैं आम लोगों तक चित्रकला को ले जाना चाहता हूँ, अपनी पेंटिंग को नहीं, बल्कि चित्र के बारे में मेरे जो विचार हैं वो बहुत सहज सरल भाषा में मैं लोगों से बात कहना चाहता हूँ कि हर पेंटिंग आपके लिए है। ये मत समझिए कि ये पेंटिंग भाई बहुत बुद्धिजीवियों के लिए है, ये पेंटिंग हमारे लिए नहीं है। समाज में पेंटिंग का इस तरह से डिवीजन नहीं होता है। हालांकि डिवीजन करने का, इस विभाजन का प्रयास किया गया, और आज जो हम आसपास देख रहे हैं कि आप जो बड़े शहरों में एक खास किस्म की कला है, और हिंदुस्तान के और छोटे छोटे शहरों में जिस तरह की कला है वो उपेक्षित है। जी। आपको मैं बताऊं कि आपको शायद इसका अंदाजा ना हो कि छोटे शहरों में, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे देवास हो, चाहे रतलाम हो, चाहे बूंदी हो, चाहे कोटा हो, इन छोटे शहरों में इतनी अच्छी पेंटिंग हो रही है, इतने समर्पित कलाकार हैं, जबलपुर में, नागपुर में है, भोपाल में है, पर उनको कोई पूछता नहीं। वो अपनी पेंटिंग 20-21 साल की उम्र में शुरू करते हैं और 50-60 साल में पेंटिंग खत्म कर देते हैं। बोले हम तो पेंटिंग किया करते थे, घर में कम से कम 50, 100, 200 पेंटिंग इकट्ठा हो गए, पर मुझे नहीं पता कि मैं पेंटिंग कर रहा था नहीं कर रहा था। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो जिस तरह की जो बात चल पड़ी है, आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा हिंदू जो कलाकार है, मैं अपने को जोड़ के मैं कह रहा हूँ कि उसको अनिवार्य रूप से महानगर का होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो उसको माइग्रेट करना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है छोटे शहर से बड़े शहर में, और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता बगैर इन सब शहरों में आए हुए आप चित्रकार नहीं हो सकते। ये लगभग मुझे लगता है कि पिछली सदी में जैसे कि पूरी दुनिया से चित्रकार फ्रांस में मूव करते थे, पेरिस मूव करते थे, उसी तरह कि उस तरह से हमने केंद्रीयता बनाई है जो कि भयंकर है। मैं शब्द को भयंकर इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इसमें मानक गड़बड़ा रहे हैं। आप जिनको महान चित्रकार कह रहे हैं वो उतने महान नहीं है। आप जब कुएं का आकार आप छोटा कर लेते हैं तो उसके अंदर जो मेढक बैठा रहता है वो अपने को डायनासोर समझता है। तो ये डायनासोर से हम गिर गए। आज़ादी के बाद जितने महान कलाकारों की जो कतार लगी है उनके बारे में आने वाला समय प्रश्न उठाएगा, और साथ ही ये भी कहेगा कि छोटे शहरों में जो उपेक्षित चित्रकार रहे हैं उनके जब चित्र मिलेंगे तो लोग दांतों तले उंगली भी दबाएंगे। तो इस अन्याय के और इस असंतुलन के खिलाफ अगर मौका मिलता है तो मैं लिखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे लेख जो है उन छोटे शहर के लोगों तक पहुँचे, और पहुँचते भी हैं। क्योंकि बिहार से मैं जानता हूँ कि मुझे कई लोगों ने खत भी लिखा है, फ़ोन भी करते हैं, और एक अखबार है जिसमें मैं नियमित हर सप्ताह इतवार को लिखता हूँ, और हर लेख के बाद फेसबुक में हो चाहे वो डायरेक्ट मेरे पास फ़ोन आते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि धीरे धीरे हम लोगों ने एक ऐसा एक माहौल बनाया है जो किसी सरकारी मदद से नहीं संभव हुआ है, किसी फाउंडेशन की मदद से संभव नहीं हुआ। मेरे और मेरे मित्रों की मदद से ये संभव हुआ है कि जब मैं किसी छोटे शहर में गया, आरा में गया, तो आरा के मित्रों ने एक आयोजन किया जिसमें बातचीत हुई। मैं जबलपुर गया, वहाँ बातचीत की। तो ये कोई बड़ी संस्था या बड़ा कोई फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं काम कर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर कुछ मैंने चित्रकार के होने के रूप में कुछ किया है तो मेरे ख्याल से यही मेरा कंट्रीब्यूशन है, यही मेरा योगदान है। और बाकी चित्र तो सभी बनाएंगे और बनते आएंगे, चलेगा ऐसे ही। धन्यवाद। Thank you for watching this video. Please support Artkeeper, subscribe and share with your loved ones. Thank you so much.